With all respect and gratitude, Venerable, I would like to ask a question. My question is related to the middle path. I have basically it's at two levels. One is a bit superficial and deeper level. Middle path conflict that I'm following at my place is that is middle path a constant or a variable? Like often I have been picked off that you are overdoing a thing or underdoing it. This is follow the middle path, the Buddha's path. Now, for me, something maybe my for something my affinity might be more. For something it might be less, or my ability to do something could be more. So there is no comparison with the other person, and is that I mean, am I not understanding the issue, or is it just that because I am able to do less or more, my middle path is different from the middle path of the other person? Then another thing that often I come across, like we read suttas or posts in the Facebook, I have read that Buddha was very particular about practice, that he always told monks, his sangha, to practice as much as possible. Even during Parinibbana time, he was praising the monk who was busy meditating. So, and a stage come when there is a sense of urgency. So, at that time, are we breaking the middle path? I mean, are we being extreme? So these kind of small conflicts, they keep coming every now and then, and I don't have an answer to that. I don't know if I do either. I mean, one of the things is to recognize that they say the purpose of the middle path, and one there's a middle way of practice, and there's also a middle way of teaching, sort of middle way of view. And but when we say a middle way, it doesn't mean that it's just sort of you take the worst and the best and you split the difference and you got a middle way. That's really not how it works. It really is in terms of the middle way for the cessation of dukkha, for relinquishing of dukkha, so that you have to be paying attention to your experience and the result of the application of that middle way, and then also some at different times within your practice, there are different ways of practicing a middle way, so that there. I remember one for quite a few years. I put a tremendous amount of effort into try to make different adhitanas, and it seemed like a good way, and then. And it seemed like a middle way in the sense of, okay, this sense of urgency was very strong, and that sense of and it was really helping. And then it started to get cluttered. And then I remember one year being with Ajahn Chah on a period of retreat and for several months, and that period of time, that vasa period, my adhitana was to not make any adhitanas. And that was a middle way, and it was a really good balance. It was very helpful because it was sort of like I was needing that kind of tangible adhitana, but then in order to find a balance, and it was, okay, I need to step back. And that didn't mean that I continued to not ever determine anything. So it's like
there's always this attention to, well, what's the result of that? What's the fruit of that? What's the experience of that? And you're always having to adjust it and be attentive to that dukkha, cessation of dukkha. And so in order to do that, you have to be bringing the attention inwards, and you have to be alert to the how it affects the heart, and so that makes it very. This is a here and now teaching. This is present in this present, and it's for each wise person to experience for themselves. So that we need to be attentive to that, and that middle way is a guideline because of the tendency of the mind to go to some sort of extreme, whether it's in terms of actual practice or in terms of view, in terms of or attachment to a particular teaching. And you see, these are ways that the mind tends to get caught and lose that balance. And when we say middle way, it's also, a good, that sense of there's a balance, or in the a way that it's expressed in the Thai language, and that Ajahn Chah would oftentimes, the idiom that he would use was it's just enough, just right. And and then you say, well, what's that mean? But it's really important that's okay, it's just enough, just right for the cessation of dukkha. ये अंतिम प्रश्न जो रह गया था, बहन ने पूछा था कि जो हम मध्यम मार्ग की बात करते हैं वो क्या सबके लिए एक ही है या अलग अलग है, और कई बार लगता है कि मैं जो ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट कर रही हूँ, कभी लगता है कम है, और अलग अलग लोगों की अलग अलग एबिलिटी है, तो मेरा मिडिल पाथ दूसरों के मिडिल पाथ से अलग होगा क्या? भगवान बुद्ध की शिक्षा में कई बार हम पाते हैं कि जितना साधना कर सकते हो करो, सेंस ऑफ अर्जेंसी है, निरंतर साधना करो, तो क्या वो मिडिल पाथ में जब माना जाएगा कि वो मिडिल पाथ में उसका कॉन्फ्लिक्ट नहीं है क्या? तो हमने उत्तर दिया कि हाँ, वो मिडिल पाथ को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, लेकिन एक बात समझ अगर हो कि इसका उद्देश्य क्या है, मिडिल पाथ का उद्देश्य क्या है, तो मिडिल वे शायद प्रैक्टिस का हो चाहे टीचिंग का हो, उसका उद्देश्य अगर हम अपने सामने रखेंगे तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। पहला तो आपने कहा कि मिडिल वे का ये मतलब नहीं है कि जो सबसे बुरा है और सबसे अच्छा है उसका बीच का उनके बीच में कुछ जोड़ लें, थोड़ा अच्छा कर लें, थोड़ा बुरा कर लें। मिडिल वे का मतलब है कि जो मध्यम मार्ग वो है जिससे कि दुख की अंत हो सके, दुख का निरोध हो सके। तो इसके लिए हमको प्रतीक्षा अपने अनुभव की ओर ध्यान देना आवश्यक है कि जो भी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ उससे क्या मेरा दुख कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, और अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ें मिडिल वे कही जाएंगी। अपना उन्होंने उदाहरण दिया कि कई वर्षों तक मैंने बहुत एफर्ट करता था एक अलग अलग तरह के अधिष्ठान बना के, और वो ठीक लग रहा था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब एक पास में तो मुझे लगा कि अब मेरा अधिष्ठान ये होना चाहिए कि मैं कोई और अधिष्ठान नहीं करूँगा। तो जो भी परिस्थिति, जो भी डिसीजन हमको दुख मुक्ति की ओर ले जाए, तनाव से मुक्ति करे, वो ही एक मिडिल वे होगा। उसका मिडिल वे का एक ट्रांसलेशन जो प्रैक्टिकल है वो है कि बैलेंस, सेंस ऑफ बैलेंस, और वो तभी होगा जब हम जो हमारी साधना का रिजल्ट आ रहा है उसकी ओर भी ध्यान दें कि हमारा दुख बढ़ रहा है कि घट रहा है, और उस अनुभव के आधार पे ही हम मिडिल वे को ट्यून कर सकते हैं कि मिडिल वे हुआ या नहीं हुआ।
और इसलिए हमारा ध्यान अंदर की ओर रहेगा तब हम मिडिल वे को ठीक से जान पाएंगे। सामान्यतः मन की एक आदत होती है कि वो अतियों में जाता है, या एक इस तरफ एक अति में जाएगा कि बहुत कम एफर्ट ही ना करें, दूसरी अति में जाएगा तो बहुत एफर्ट करेगा, और कई बार किसी व्यूज़ के प्रति अटैचमेंट हो जाती है, प्रैक्टिस के प्रति अटैचमेंट हो जाती है, किसी टीचिंग के प्रति अटैचमेंट हो जाती है, तो वो दुख का ही कारण बनती हैं। तो इसलिए हमको जो साधना का जो फल मिल रहा है उसकी ओर ध्यान देना चाहिए कि क्या हमारा मन फिर चिपक रहा है किसी बात से, किसी व्यू से, किसी टीचिंग से, तो बैलेंस पाने की आवश्यकता है। आप बता रहे थे कि थाई भाषा में जो अजान चाह उसका ट्रांसलेशन करते थे कि यही काफ़ी है, यही ठीक है। तो अब ये क्या ठीक है ये भी कहना मुश्किल है, लेकिन हम अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं कि हाँ ये ठीक है, क्योंकि ऐसा करने से मेरे दुख की समाप्ति हो रही है, दुख का निरोध हो रहा है।